Welcome back to today's session. In the last session, we had started with the chapter Fundamental Unit of Life. We had completed some portion of it. And today we are going to continue from where we left. We were discussing about the cell organelles. And in this session, the first organelle that we are going to discuss about is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of some membrane-bound tubules and sheaths. And this is how the structure looks. It is sometimes in continuation with the nuclear membrane as well. And the structure of the membrane of the endoplasmic reticulum, it is similar to the structure of the plasma membrane. Now, if we talk about the types of endoplasmic reticulum, there are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Their name is based on the fact that rough endoplasmic reticulum, they appear rough because they have ribosomes attached to their surface. They have ribosomes studded to their surface, because of which they appear rough when we observe them under a microscope. And if we talk about smooth endoplasmic reticulum, they are not having any ribosomes attached to their surface, because of which they appear smooth. Ribosomes are particles, they are structures that are associated with protein synthesis. So ribosomes are a site for protein synthesis. And needless to say, because rough endoplasmic reticulum have ribosomes attached on their surface, rough endoplasmic reticulum is the place where manufacture of proteins takes place. So rough endoplasmic reticulum manufactures or produces proteins, and then these proteins, they are sent to wherever they are required in the cell depending on the need. The smooth endoplasmic reticulum, on the other hand, is associated with the manufacture of fats and lipids. Right? And these proteins and the lipids that are produced by the endoplasmic reticulum as a whole, they help in building up of the cell membrane, of the plasma membrane, because we studied in the last session that plasma membrane is made up of lipids and proteins. And this process of, making up of a membrane is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids, they are also involved, that are produced by the endoplasmic reticulum. They are also involved. Some of them form hormones, some of them form certain enzymes. So many functions are, performed by these proteins and lipids that are manufactured by the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum also serves as a network, as a channel for the transport of materials, especially proteins, between the regions of the cytoplasm or between the regions of the cytoplasm and the nucleus. So it forms a network through which these materials, especially proteins, can be transported. And endoplasmic reticulum, it also provides a certain space, a surface where some chemical activities, biochemical activities of the cells can take place. And in liver of vertebrates, especially in them, smooth endoplasmic reticulum, it is involved in detoxification function as well. So it plays a major role in detoxification of many poisons and drugs that are present inside the body. Talking about another cell organelle that works in very close proximity, very close association with the endoplasmic reticulum is the Golgi apparatus. Golgi apparatus was first discovered by the scientist Camillo Golgi, जिनके नाम पे उनका नाम, the organelle's name has been given. And Golgi apparatus also consists of certain membrane-bound vesicles and flattened tubules or flattened sacs that are arranged parallel to each other in these stacks that are known as cisterns. So Golgi apparatus का अगर हम structure देखेंगे तो हमें लगेगा बहुत सारे sacs जो हैं वो parallelly एक दूसरे के arranged हैं. And Golgi apparatus जो है वो बहुत close connection, बहुत close proximity में it works with the endoplasmic reticulum, and together endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, they form a major part of the cellular membrane system. So Golgi apparatus अब करता क्या है?
जो प्रोटीन्स, जो लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, उनकी मॉडिफिकेशन करना, उनको पैकेज करना एंड ट्रांसपोर्ट करना टू वेरियस टारगेट साइट्स. That is what Golgi apparatus does. That is why it is placed very close to the endoplasmic reticulum, because the material that is synthesized in the endoplasmic reticulum, it is modified, it is packaged, and it is dispatched to various targets by the Golgi apparatus, right? So its major function is modification, storage, and packaging of the products that are formed by the endoplasmic reticulum. So जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, जो शुगर्स हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं गोल्गी अपैरेटस, एंड मॉडिफाई करने के बाद उसको पैक करके in the form of vesicles, they are sent to different places in need. Golgi apparatus is also involved in the formation of another organelle that we'll study about, which is lysosome. Next बात करते हैं lysosomes की. Lysosomes are small single membrane bound spherical structures, spherical sacs, जिनके अंदर भरे होते हैं कुछ digestive enzymes, and these enzymes that are present inside the lysosome, they are synthesized by the rough endoplasmic reticulum. Lysosome is kind of a waste disposal system of the cell. It keeps the cell clean by digesting all the worn out old organelles or any foreign material that comes inside the cell, because the enzymes that are present inside the lysosome के अंदर जो enzymes present है, these are digestive enzymes, these are hydrolytic digestive enzymes, जो कि किसी भी foreign particle को, किसी भी old organelle को, कोई भी ऐसा waste material जो है cell के अंदर, उसको digest कर सकता है, उसको break down कर सकता है. So that is why it is also known as the waste disposal system of the cell. ये बहुत powerful enzymes होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी यूज्ड अप मटेरियल को, बोर्न आउट मटेरियल को एनगल्फ कर सकते हैं. एनगल्फ इन द सेंस ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेल is very old, it is worn out, लाइसोसोम कैन बर्स्ट इनसाइड द सेल. बर्स्ट होने के बाद जो उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसकी वजह से पूरी की पूरी सेल जो है वो डाइजेस्ट हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है. दैट इज व्हाई लाइसोसोम्स, दे आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. Next, another very important organelle present in the cell is known as mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. क्यों? क्योंकि जो हमारी energy generating currency है, the energy currency ATP, adenosine triphosphate, that is manufactured or that is produced inside the mitochondria. If we look at the structure of the mitochondria, mitochondria has two membranes, an outer membrane and inner membrane. Outer membrane जो है वो folded नहीं है, it is continuous. थोड़ा सा porous होता है, pores present होते हैं outer membrane पे, पर जो inner membrane है आप देखेंगे it is deeply folded. तो जो inner membrane है उसमें हमें ये folds देखने को मिलेंगे, and these folds, they are known as the cristae, and they increase the surface area for ATP generation. ये क्यों folded होते हैं? So that we have more surface area for ATP generation. ATP is the energy currency of the cell. जितनी भी energy हमें किसी ना किसी chemical activity के लिए चाहिए, that is given in the form of ATP molecules, adenosine triphosphate. And ये ATP molecules कहाँ पे बनते हैं? ये ATP molecules, they are produced, they are released inside the mitochondria, and that is the reason we say that mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. जितने भी एनर्जी एटीपी में स्टोर्ड है वो किसी ना किसी बॉडी के मैकेनिकल वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल ऑर्गेनल है. व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए है और अपने खुद के राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम्स, जैसा कि हमने बात की थी, दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज एक्चुअली एबल टू, it can make some of its proteins on its own because it has its own ribosome.
So these organelles, mitochondria and plastids, इनको हम semi autonomous organelles भी बोलते हैं. They are also known as semi autonomous organelles. Why? Because they have their own DNA and they have their own ribosomes and they can produce their own proteins. Talking about plastids, plastids is an organelle which is only present in plant cells. प्लास्टिड्स जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. प्लास्टिड्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स. इनकी वजह से प्लांट्स में जो हम कलर्स देखते हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. ल्यूकोप्लास्ट आर व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. इनमें कोई कलर नहीं होता. इनका जो मेजर काम होता है वो स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, इनके लिए यूज होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन काम है वो स्टोरेज का पर्पस होगा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एक्सेट्रा. क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्रोमोप्लास्ट में कुछ कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स को उनका कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है. एक ऐसा ही क्रोमोप्लास्ट जो हम बहुत कॉमनली जानते हैं इज क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is a type of chromoplast which has a green pigment in it called chlorophyll, which help in photosynthesis. Photosynthesis के लिए help करते हैं, right? इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा. देयर आर many membrane layers which are present in a material known as stroma, and बहुत सारे हमें ये structures दिखेंगे जो हम आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. These coin like structures, they are stacked on top of each other, right? These are known as thylakoids. इन्हें thylakoids बोलते हैं, which you will study in higher classes. And as we discussed, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस में दे प्ले अ मेजर रोल. एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स जो हैं इनके पास भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है. तो दो ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज दे हैव देयर ओन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डीएनए. वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल भी मेजरली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. एनिमल्स में अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो काफी छोटे साइज का होगा. वैक्यूल जो है ये भी एक स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारा फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल जो है स्टोर हो सकता है. एंड ये जो चीजें हम वैक्यूल के अंदर जो भी स्टोर होती है इनको हम सेल सैप कहते हैं. इट इज नोन एज दी सेल सैप, राइट? स्मॉलर होगा एनिमल्स में, प्लांट्स में थोड़ा बड़ा होगा. ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ द स्पेस ऑफ द सेल ऑक्यूपाई कर सकता है वैक्यूल. सिंस इट हैज so much cell sap in it, इतनी सारी लिक्विड चीजें इसके अंदर भरी होती हैं, तो ये जो सेल है उसको एक टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. And various things can be present inside the vacuole. Certain waste substances, water, amino acids, sugar, organic substances, proteins, etc. They can be stored inside the plant vacuole. कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं अमीबा जैसे, उसमें एक स्पेशल टाइप का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल स्टोर्स फूड inside, or the food item that amoeba has consumed, it contains that food vacuole, food inside the vacuole. कुछ vacuoles जो होते हैं, for example contractile vacuole, they help in the excretion of waste substances from the body surface of unicellular organisms like amoeba. Lastly, बात करेंगे cell division की. How does cell division take place, and actually why cell division is important? Cell division is the process by which new cells are formed. New cells body में बनना क्यों जरूरी है? New cells body में बनना इसलिए जरूरी है ताकि हम grow कर सके, हम old and dead cells को, injured cells को, wounded cells को replace कर सके. And cell division is also important for producing gametes जो reproduction के लिए important है. So the process by which new cells are formed, it is known as cell division. And cell division जो है वो दो main type का होता है, mitosis and meiosis. जो cell division use करते हैं हम growth के लिए,
to replace old and dead cells, to replace injured cells, healing के लिए जो cell division use होती है, that type of cell division is known as mitosis. In mitosis, each mother cell divides to form two identical daughter cells. एंड माइटोसिस की जो खास बात है वो ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में होगा वही क्रोमोसोम सेम विल बी present in the daughter cell. So the chromosome number doesn't change. It will remain the same in the daughter cell and the mother cell. And mitosis mainly किस लिए use होता है? Growth and repair of tissues in the organism. The next type of cell division जो reproductive tissues में पाया जाता है, cells of reproductive organs and tissues जिनसे gametes produce होते हैं, that type of cell division is known as meiosis. Meiosis में दो consecutive divisions होते हैं, तो meiosis में एक cell जो है वो दो बार divide करती है, जिसकी वजह से हमें एक सेल से चार डॉटर सेल्स मिल सकती हैं. So when a single cell divides by meiosis, we get 4 daughter cells. When a single cell divides by mitosis, we get 2 daughter cells. But when a single cell divides by meiosis, we get 4 daughter cells instead of 2. And another unique feature is that the chromosome number will be half in the daughter cells. So agar mother cell में chromosome number is 2 and daughter cells में the chromosome number is going to be n. So that is why माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है. मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स इज हाफ ऑफ दैट which is present in the mother cells. And as we know, meiosis is used for the production of gametes that will further fertilize and form a zygote, which will lead to the rise of a new individual, right? That is all for this session. I'll see you all very soon in the next session.